Okay, Standard 9, Chapter number 11, Work and Energy. Uh, in previous lecture, we have discussed about potential energy. The formula of potential energy was EP is equal to mgh. Now, in this lecture, we will discuss two examples of that energy and the law of conservation of energy. Now, in example 11.5, you can find out that find the energy possessed by an object of mass 10 kilogram when it is a height of 6 meter above the ground, given g is equal to 9.8 meter per second square. So in this example you can find out that the mass m is given 10 kg, a height of 6 meter, that is h is equal to 6 meter, and g is also given. So the formula of the potential energy, that is ep is equal to mgh. So put the formula and the values in the formula, that is 10 into 9.8 into 6 is equal to 588 joule. Why this is joule? Because this is energy, and energy is calculated in joule. Okay, so in example 10.6, an object of mass 12 kg at a certain height above the ground. If the potential energy of an object is 480 joule and the given g is 10 meter per second square. So here mass is given, energy is given, and g is given. So you have to put formula EP is equal to mgh. Value of energy is given 480 is equal to 12 kg into 10 meter per second square into h. So if you take h is equal to, so it will be 4 meter. The object is at height of 4 meter. It is a simple math. The values is given and you have to just put formula and you can get answer. Now 11.2.5, are various energy forms interconvertible? So in this point इट इज वांट टू से दैट कि जितनी भी एनर्जी के फॉर्म्स है वो इंटरकन्वर्टिबल है या नहीं है. ओके, सो यस ऑब्वियसली है. जैसे कि हम देखते ही हैं केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, या वाटर एनर्जी जो है स्पीड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, उसका यूज करके हम टरबाइन चला के क्या करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, वैसे ही जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं सोलर एनर्जी का यूज करके ग्रीन पिगमेंट्स की मदद से उनका फूड बनाते हैं. तो ऐसे वेरियस एनर्जी फॉर्म्स जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है. ओके, सो इन एक्टिविटी 11.13, सिट इन स्मॉल ग्रुप्स, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर, डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चन इज योर ग्रुप. Number A is given, how do green plants produce food? So in how do green plants produce food? So green plants produce food by photosynthesis process. They use solar energy, the carbon dioxide from atmosphere, and the water from the ground level, and make their food from solar energy. Number B is given, where do they get energy from? They get energy from sun. And see, why does the air move from place to place? Okay, D is given, how are fuels such as coal and petroleum formed? So for fuel and petroleum, how does form? So it is formed by the mass of living organisms. Okay, E, what kind of energy conversion sustain the water cycle? So वाटर साइकिल की जो कुछ भी एनर्जी कन्वर्जन है वो किस तरीके से होती है. ओके, इन 11.14 it is given that many of human activities and the gadgets we use involve conversion of energy from one from the other. So in many of the energies, that is if you watch TV, you have a remote. In remote we use cell. In cell, that is chemicals, and chemical give chemical energy. From that it is converted into electrical energy. Okay, in mobile also there is a battery in which the chemicals are filled up, and this chemicals from chemical energy, that is battery, convert this into electrical energy. Okay, same as if we switch on the light, the electrical energy is converted into light energy. Okay,
So all the energy forms are interconvertible. What do you mean by interconvertible? मतलब कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. Now 11.2.6 law of conservation of energy. Now if you remember that the law of conservation of mass we have learned in our lecture. So in that lecture we have learned that the mass is not cannot destroyed or cannot be created. Okay, so this is also just like that. So the total energy before and after the transformation remains the same. Okay, मतलब कि एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है, तो वो कन्वर्जन होने के बाद जो जितनी भी टोटल एनर्जी है वो जो है वो सेम रहेगी. अंडरस्टैंड? सो देयर इज एग्जांपल. Consider an example. Let's an object of mass m be fall freely from the height h at the start. The potential energy is mgh and the kinetic energy is 0. Why is the kinetic energy 0? So it is 0 because its velocity is 0. The total energy of the object is thus mgh. Okay, so here in last, that is potential energy plus kinetic energy is equal to constant, or mgh plus half mv square is equal to constant. Why it is constant? Because in first potential energy plus kinetic energy is equal to constant. The sum of kinetic energy and potential energy of an object is टोटल मैकेनिकल एनर्जी. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हम सम करेंगे तो वो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी. ओके, नाउ रेट ऑफ डूइंग वर्क. मतलब जब कभी भी वर्क कर रहे हैं तो उसका रेट, ओके, उसके बारे में बात हो रही है. अब रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है एक्चुअली उसको हम बोलते हैं पावर. मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क डन हुआ उसको हम बोलेंगे पावर. ओके, सो a stronger person may do certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in a shorter time. Okay? So जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर दो लोग हैं, कोई एक पत्थर उठाना है हमको, कोई एक रॉक को खसकाना है, उठाना है. So suppose someone is very strong and compared to some other person which is not that stronger. Okay? So the strong one will do work fast. Understand? So power is equal to work by time, which is also called rate of doing work. Okay. The unit of power is watt. James Watt having the symbol W. Okay. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. मतलब the 1 watt power is equal to 1 joule per second. पावर के अलग अलग, the power of an agent may vary with the time. Okay, so the last point in this chapter, that is commercial unit of energy. commercial unit जो है वो क्या है एनर्जी का? जैसे कि हमने पूरे चैप्टर में देखा कि फर्स्टली जो कोई भी एनर्जी थी हम जूल में मेजर कर रहे थे, बट जूल इज अ वेरी शॉर्ट unit of small unit of energy. Okay, we cannot use this in our daily life. So the bigger unit is used, which is called kilowatt hour. The short form is kWh. Okay, 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt into 1 hour. That is 36 lakh joule. So it is convertible in exponent form, power in exponent form. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joules. 11, you have to complete the exercise of this chapter. Example 11 point and 11.9 you have to complete. Now if we take 11.9, that is an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of the energy consumed in 1 day by the bulb. A power of bulb is given, that is 60 watt.
सो हम सबसे पहले इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.06 किलो वॉट। क्यों? क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.06 किलो वॉट। टाइम यूज कितना है? 6 आवर्स पर डे, तो दैट इज 6 आवर। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.36 यूनिट्स। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी नाउ देन यू कैन आस्क। किसी का कुछ क्वेरी है? डू यू हैव एनी क्वेरी? ठीक है, अ, इसकी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखना है आपको। अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन अनम्यूट योर वॉइस। सबको ये एक्सरसाइज जो है वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, और आपकी प्रीलिम एग्जाम आने वाली है कोई, ओके, तो उसका असाइनमेंट मैं भेजूंगा आप लोगों को। तो आपको वो असाइनमेंट में से ही लर्न करना है, और उसमें से ही क्वेश्चन आंसर होंगे। मे बी पॉसिबल कि जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हो सकती है, और ऑफलाइन ही होगी शायद। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं आज या कल असाइनमेंट आप लोगों को भेज दूंगा, और उसमें से ही पेपर होगा, तो आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है, यहाँ पे हम सेशन खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। ओके।